चैप्टर 10 में मनकानी डॉकिंस के क्लेम को चैलेंज करते हैं जब डॉकिंस कहते हैं कि साइंस ने कम्प्लीटली सुपरसीड कर दिया है रिलीजन को इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मनकानी आर्ग्यू करते हैं कि डॉकिंस कम्प्लीटली फेल्ड टू एक्सप्लेन की एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस थ्रू साइंस इन चैप्टर 4। वो पॉइंट आउट करते हैं कि डॉकिंस नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि किस तरह लाइफ इमर्ज हुई अर्थ के ऊपर, रिजॉर्टिंग इंस्टेड टू प्रोबेबिलिटीज़ एंड व्हाट डॉकिंस हिमसेल्फ कॉल्ड द मैजिक ऑफ लार्ज नंबर्स। यानी जब डॉकिंस ने चैप्टर 4 में क्लेम किया था कि अगर चांसेस ऑफ लाइफ इमर्जिंग आर 1 in a billion, there would still be life on a billion planets given the estimated billion planets in the universe. डॉकिंस इसको डिसमिस करते हैं एज बीइंग नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल, और वो कहते हैं कि ये कहने की इक्वल है कि एक एम्प्टी जग है और उससे मैं एक पानी का ग्लास फिल कर रहा हूँ, तो इस चीज़ के चांसेस 1 in a million है, और क्योंकि मैं ये कर पा रहा हूँ इट शुड कम एज नो सरप्राइज बिकॉज अ मिलियन अदर पीपल ऑन द प्लानट ट्राइड एंड फेल्ड टू डू सो। मनकानी नोट करते हैं कि डॉकिंस सिमिलर रीजनिंग पेश करते हैं टू एक्सप्लेन हाउ अर्थ एंडेड अप इन द हैबिटेबल कोट गोल्डीलॉक्स जोन, और किस तरह यूकैरियोटिक सेल ओरिजिनेट किया और कॉन्शियसनेस किस तरह ओरिजिनेट की। मनकानी डॉकिंस की पोजीशन को समराइज करते हैं एज एसेंशियली सेइंग, लुक वी आर हियर आरंट वी, दैट प्रूव्स दैट इट कैन हैपन नाउ, डोंट आस्क मी हाउ। मनकानी ये पूछते हैं कि साइंस किस तरह एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर पाएगी जब वो अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैटर किस तरह फ्रॉम नथिंगनेस ओरिजिनेट करता है, या फिर लाइफ किस तरह ओरिजिनेट करती है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, या फिर यूकैरियोटिक सेल की ओरिजिन क्या है, या कॉन्शियसनेस की ओरिजिन क्या है। मनकानी लास्टली इन्विजन करते हैं कि डॉकिंस के वर्ल्ड व्यू के मुताबिक एक सोसाइटी ऑफ मॉरल कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथीस्ट्स किस तरह की लगेगी, और वो ये पैसेज लिखते हैं। फर्स्ट, they would all be pro-choice, meaning that abortions would be routine, everyday procedures. Anytime a woman gets inconveniently pregnant, she would go and get an abortion and remove that embryo, which probably doesn't suffer. Promiscuity would be very high because the states would be lower. Marriage in any case would be meaningless and no more of a commitment than living together. Second, homosexuality, pedophilia, bestiality, etc. would have no grounds for being considered immoral, as long as the child or the animal is not suffering in a very myopic sense as a result of the relationship, it would be deemed permissible. Moreover, children would actively be sexualized in primary school through the efforts of queer theorists and activists via drag shows and placing pornographic books about exploring sexuality in children's libraries, as is already happening in the US, UK, and Canada. Other acts that are today considered reprehensible would also be normalized. As Dawkins himself says, prohibiting cannibalism in the case of people who were already dead and unmourned would be difficult to prohibit in the absence of an absolutist religious morality. Finally, physician-assisted suicides would also be as commonplace as appendix removal or embryo removal. And since the highest goal of the consequentialist is to minimize suffering, any time life became a source of suffering would be a good time to end it. Therefore, teenagers would be regularly making use of the assisted suicide facility because adolescence is a difficult phase. Most heartbreaks would end up in suicide. The death of a loved one would also be a good motive to end your own life. Certainly, it would be much easier than living with the pain of separation. We can see that such a society would be, by its very nature, unsustainable. It would not be adapted for survival because the death rate would be very high and reproduction very low. Because of the normalization of transgressive sexual behavior like homosexuality and bestiality, far less babies would be conceived. Many of these conceived would be aborted. Of those who were conceived and born, few would make it past the difficult teenage years into adulthood. The good work done by evolution to bring us to this point would be undone by the moral philosophy of those very people who hold evolution in such high regard.